Dr. Prakash, he has already done 2 stations. Dr. Sugra, Dr. Manik, Dr. Tayyeba. Yes, sir, I'll do it. Okay, Dr. Manik, let's do it. Okay, sir. Okay, this is your station. So read the scenario. Mhm. Pretty easy one. Oh. Yes, sir. Experience in lifetime. Yes, sir. Okay, This looks like. Sorry. Yeah. so what is your impression? Read the CT scan first. This is an axial cut where we can appreciate there is this subarachnoid hemorrhage in the basal cistern and intrahemispheric as well as in sylvian cistern. So most likely it's a SAH. All right. So what are the different causes of subarachnoid hemorrhage? The most common one is traumatic, and the secondary causes can be because of rupture aneurysm. It can be also from AVM. Those are the three most common, sir. What other causes apart from the AVM and the aneurysm? Trauma is most common, sir. Okay, all right. So what other investigations you will order in this patient? I would like to proceed with the CT angio, sir. All right. And what is gold standard investigation? DSA, sir. What do you want to see in the CT angiogram? What I would like to see in CT angio, I would like to see the architecture of most common sites. Right. What are the most common sites of bleed or aneurysms? The most common is ACOM, followed by PCOM and MCSL. All right. So if there is bleed in the anterior interhemispheric sphere, so where is the bleed? Where is the ACOM? Oh, sorry. Where is the bleed from? If there is a predominant SAH localized to interhemispheric fissure, then most likely it's ACOM aneurysm. ACOM or the DACA? DACA, sir. Yes. All right. ACOM, sir. Okay. And what if there is bleed in the third ventricle? Mostly it's a basilative aneurysm. It could be also from PCOM, sir. All right. So how will you manage this patient? So I'll proceed with the angiography, most likely DSA. And then once first I would like to stabilize the patient, and based on patient's Hunt and Hess score, then I'll obtain further detailed study of angiogram. And if patient is stable and Hunt and Hess is less than 3, then I'll proceed with surgery, sir. Early surgery. What is Hunt and Hess classification or grading? These are the clinical classification in case of patient with spontaneous subarachnoid hemorrhage, where we can classify based on patient's clinical stage, which start from 0 to 4, sir. So 0 for unruptured aneurysm, 1 for mild headache, 2 for headache and nuchal rigidity with the cranial nerve deficit, 3 for focal neurological deficit. Patient is stuporous. 4 is patient is comatose. Can you tell me what is the importance of Hunt and Hess classification? Why do we classify? It will help us to predict 30 days mortality as well as vasospasms. All right. So is there any other classification method for the subarachnoid hemorrhage? Yes, sir. There are
radiological classification like modified Fisher, and another clinical classification like the WFNS grading, sir. What is WFNS grading? It's basically the grading system based on GCS as well as some neurological deficits, sir. It has also, I think, 4 or 5 category. Mhm. Can you name them? Yes, What is sir. the difference between 1 and 5? If GCS is 13 to 15 without neurological deficit, that's a grade 1. And if GCS is 9 to 9 to 12 without measured neurological deficit, that's a grade 2. And same GCS with measured neurological deficit. And if GCS is less than 9 to 7, and then 3 to 6. All right. For suppose you have admitted this patient in the high dependency unit, Yes, sir. what will you order to the attending doctor? What would be your prescription like? What medications you will give this to this patient? The most important thing will be maintaining ICP, for which as well as I'll start with the prevention of vasospasm, prescribing nimodipine, and what else I can give. And if I'm delaying surgery, sometime I can use Transtat, tranexamic acid. And yes, sir, that's the only thing I can think of. Okay, if you do not treat this patient, Yes, sir. what complications patient can develop from here? What are the most common complications? The most common complication is re-rupture, which occurs within the first 24 hours, highest time, and within first week, sir. So re-rupture and higher mortality from re-rupture. How will you prevent the rupture in this patient? By doing early surgery, sir. By maintaining the blood pressure? Yes, by maintaining the blood pressure, as well as doing early surgery, sir. Okay, what other complications patient can have apart from the rupture or rebleed? Patient can have stunt cardiac and pulmonary syndromes, sir. Okay. Common ones. And common ones increase ICP, leading to cardiorespiratory virus. More common ones. There are a lot of complications, 6 or 7 complications of subarachnoid hemorrhage. Hydrocephalus. Okay. How you would address the hydrocephalus in this patient? So there's two schools of thought regarding managing hydrocephalus in patient with the acute subarachnoid hemorrhage. Some believe that putting EVD is useful, and some believe that putting EVD and decreasing ICP will increase the risk of rebleeding, sir. So after doing shunting or the EVD, how you are going to prevent the chances of rebleed? How I can prevent the chances of rebleed? Maintaining EVD, not allowing rapid decompression or rapid CSF release. Right. CSF drainage. Okay, so apart from rebleed, hydrocephalus, what other complications patient can have? I can't think of, sir. It's very straightforward, but I can't think of it. Okay, so there are a lot of it. So the patient can have these seizures. So you have to prevent the seizures. You have to give anti-epileptic to the patient. Then the patient can have the one of the complications you already told, vasospasm. Yes, sir.
right? So how do you, Yes, sir. what is vasospasm basically? It can be defined clinically and radiologically if there is a deterioration of patient tissues without obvious radiological finding of ICP, and uh, if we do angio, there is a decrease in uh, vessel, what do you call, caliber, Right. when compared to previous angio. So Okay, so how do you treat it? When does the vasospasm occurs? the peak period it starts from third day to 7 days, but it can occur up to 14 to 17 days. So, Okay, so how do you treat the vasospasm? uh, there are three ways, just like we do in stroke: hemodilution, hypervolemia, and maintaining the blood pressure. And if that does not help, then we can use some medications such as nimodipine chemical spasmolysis as well as balloon angioplasty. All right, so you ordered an angiogram in this patient. There's an MCA aneurysm. How you are going to treat the patient? The most of MCI aneurysm, the choice of treatment would be uh, microsurgical clipping, but depending on the branches or location of aneurysm, these days coil embolization can also be done. But current standard of practice is microsurgical clipping. So All right, so what is the other advantage of microsurgical clipping? it has a lesser recurrence rate compared to embolization. What else? And it's like complete obliteration. And if I think that's the only thing I can think. I don't know why. Right. And when do you prefer the embolization? When patient is older and not fit for surgery, and if the aneurysm is not located near bifurcation, or if there is no vessel passing through the aneurysm itself. So, All right. So in embolization, what material do we use? it's a coil embolization. Apart from It's it, made of. is there any other method? Uh, I think there are Onyx liquid embolization, but mostly it's like coil embolization is used for aneurysms. Right. Okay, so Dr. Manik, you were very good and you answered most of the questions right. But regarding the management and the complications, these are very important ones and uh, you need to review them again. Okay, sir. So this was the questions which I asked and you answered most of them, right? So let's come to the etiology. Etiology, the most common one is the trauma, yes, but in the spontaneous subarachnoid hemorrhage, there is a long list of the disease. First on the top, obviously, is the aneurysms. Then there are the AVMs. This page has been taken from the Greenberg, so you can review these all condition, including the pituitary, apoplexy, and there's a artery dissection, cerebral artery dissection, a lot of important ones in the etiology. Coming to the classifications, Hunt and Hess classification is very important, and you answered it rightly so. For the management purpose, if the patient is at the Hunt and Hess 1 or 2nd grade, we can proceed for the surgical intervention. Whereas if 3 or higher, if the patient is at the 3 grade, we can wait. If the patient improves clinically, then we can proceed for the surgery. Whereas 4 and 5, these are relatively risky going for the surgery, right? So another important implication of the Hunt and Hess classification is regarding the vasospasm.
This is the WFNS grading system. So all three grading systems, the Hunton Hess, WFNS, as well as the Fisher's grading, should be on your fingertips. So coming to now, when the discussion starts on the subarachnoid hemorrhage, most importantly, it goes to the complications. Like just I asked about the hydrocephalus, they can ask about in which patients you will go for the VP shunting, in which patients you will do the EVD, why, and how you are going to prevent the chances of rebleed by keeping the intracranial pressure within a limit. जल्दी से उसको rapidly decrease नहीं करना होता है. Then why does it occur? Because of the in the vessels, there's because of the mechanotrauma or because of the certain chemicals, there's the constriction of the vessels, and it can occur from the third day till the 14th day with the peak on the 7th day. How do you diagnose it? Clinically, you diagnose it by looking at the patient. If the neurology worsens in the patient, or if a new neurological deficit occurs in the patient. And in the angiogram, you are going to confirm it if there is the vasospasm or not. How do you treat it? You treat it by the conservative measures such as the triple H therapy, hemodilution, hypervolemia, and hypertension. Whereas if this fails, then you have to approach it or you have to intervene it. In the intervention, you can place the stent in the vessel that is narrowed, or you can intra-arterial, you can give the different drugs such as the calcium channel blocker. Nimodipine can be given intra-arterially, as well as you can give other vasodilator agents. And this is the basically percentage of the occurrence of vasospasm according to the grades in the Hunton Hess as well as in the modified Fisher grade, by which you can predict the chances of vasospasm. Coming to a very important discussion about clipping versus coiling. There are certain conditions such as the MC aneurysm. You will prefer the clipping versus the coiling because it has branches near the aneurysm. These branches, so it becomes very difficult to coil the MC aneurysms. Similarly, if there is an associated hematoma, so by doing the surgery, you can evacuate the hematoma as well as address the aneurysm. For the decompression as well as to address the neurological deficit, again there is a discussion over it. If there is a patient has a neurological deficit, it is going to improve more if you go for the microsurgery versus the coiling. Whereas there are certain conditions in which you cannot go for the surgery if the patient is old age, if the patient has deranged coagulation, if the WFNS or Hunton Hess score is low. So in these conditions, you prefer the coiling, as well as the posterior circulation, particularly the basilar apex aneurysm, you will prefer the coiling. Coming to early versus late intervention. Early intervention obviously is going to reduce the chances of rebleed. It is going to facilitate the treatment of vasospasm as well as evacuation of the hematoma, which can cause the pressure effect and causing the neurological deficit in the patient. Whereas late intervention is preferred in those patients in which the GCS is poor, or if the infarct is present, or there is too much of the edema, so we'll wait till the edema subsides, then we can proceed for the surgery. However, if there is edema which is causing the midline shift, and obviously there are the pressure effects, so in patients where early surgery is preferred. Okay, so this brings us to the end of the station regarding the subarachnoid hemorrhage. If anyone has any question, they can ask. Dr. Manik, you want to ask any question? No, sir. That was okay, sir. Thank you, sir. Okay, you are good, pretty good, right? So let's go for the next station. Most of you have already seen it. So who is going to attempt it?
It is from functional neurosurgery. Um, बड़ा कम आता है, but it is an important potential station, and so one should be ready for it. From functional neurosurgery. Anyone want to volunteer for it? Dr. Michelle, Dr. Tayyiba? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Dr. Michelle? जी सर। Okay, so have you seen this instrument before? Yes sir। So what it is? Lexel frame, Lexel frame. Why do we use it? and this frame is used for many different reasons. In case of the take the biopsy from the deep seated lesions, for catheter placement, for DBS, for lesioning. Nice, very nice. So in DBS, in which conditions we use it and where do we use it? Can you tell me 2 or 3 indications? Yes sir, DBS done in case of the movement disorders, which include Parkinson disease, dystonias. It is also cause it is do in case of the epilepsy, in case of depression, in case of obsessive compulsive disorders, in case of chronic pains. Okay, in particularly in Parkinson disease, where do we do the stimulation? Sir, we give the stimulation to the globus pallidus internus, depending upon the symptoms. In case of tremors. In case of tremors, where? Tremors, thalamic stimulation we call. Where in the thalamus? Subthalamic nucleus. It is the ventral intermediate nucleus of the Yes, thalamus. VIM. Yes. Okay, can you tell me what are the contraindications for the using this instrument? Sir, contraindication if the patient have the coagulopathy, if the patient having any movement disorders already, Right. and the old age patients. Okay, old age is not a contraindication, but bleeding disorders or platelet count less than 50,000 will not perform Okay, sir. the TBS. Okay, so besides the Parkinson, what are the conditions? Dystonia में कहाँ पे हम करेंगे deep brain stimulation? उसमें भी ग्लोबस पैलिडस पे देते हैं। उसमें भी ग्लोबस पैलिडस पे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि what are the possible complications? Yes, sir. The complications including the risk of the hemorrhage, the risk of the infection, the risk of the catheter displacement, the risk of the diplopias. If we not properly target the lesion, then the complication related to the if we go posteriorly, then the patient complain of paresthesias, diplopias. राइट, मुझे ये बताएं कि आप पेशेंट को जो अप्लाई करने लगे हैं ये लेक्सेल, तो कौन से पॉइंट्स पे आप इसकी स्क्रूज अटैच करते हैं? सर इसके वो जो सुप्रा ऑर्बिटल करते हैं, मतलब सबसे पहले इसमें हमने स्कल ब्लॉक देना है पेशेंट को, और उसके बाद इसके हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे और सुप्रा ऑर्बिटल साइड्स पे और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन. Right. 2 would be supraorbital, 1 or Yes, 2 sir. centimeter above the supraorbital ridge. Yes, sir. 2 behind the ear, and 1 would be posteriorly Back. placed. Yes, sir. Okay, nice. So you were good, Dr. Misha. You answered most of the questions right. These are the potential points where you can apply the screws. ये थोड़ा सा ear पे अंदर लगा दिया है इन्होंने. This will be placed behind, just behind the ear. 2 points would be supraorbital. These are the indications, including the biopsy, catheter placement, electrode placement, lesion generation, evacuation of the intracerebral hemorrhage. But the most important one would be performing the radiosurgery, the deep brain stimulation, and for taking the biopsy.
ये कुछ पॉइंट्स हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के. The common ones, Parkinson disease में subthalamic nuclei was previously the target, but nowadays we target the globus pallidus interna when the bradykinesia is predominant. Whereas if there is the tremors, also in the essential tremors, we go for the thalamus, where in the thalamus particularly it is the ventral intermediate nucleus. For dystonia, we target the globus pallidus. और इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने बताई वहाँ पे इट कैन कॉज द एडिमा, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और रिकरेंस हो सकती है. सो ऑल दीज आर द पोटेंशियल complications regarding the use of stereotactic or the deep brain stimulation. Let's move to the next station, which is a bit tricky one. Any volunteer? Dr. Sara, are you there? Dr. Harun? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Dr. Harun, आप करेंगे attempt next station? Yes, sir. Yes, sir. I can attempt. Okay. So read the scenario. So the 45-year-old presented with a severe pain and redness in the eye on examination of his pulse and positive bruising. क्या Yes, sir. क्या impression है आपका डॉक्टर हारून? सर प्रोप्टोसिस है सर, और सर साथ केमोसिस भी है सर. सही. तो आपकी स्पॉट डायग्नोसिस क्या है? सर पर्स्टल ब्रूई है तो सर वो अपना सीसीएफ है सर. ओके. सो मुझे आप बता सकते हैं कि सीसीएफ की कितनी टाइप्स होती हैं? सीसीएफ सर एक सर ट्रॉमेटिक सर हो सकता है, ट्रॉमेटिक. उसके अलावा सर अपना वेस्कुलर. ये तो आप कॉजेस बता रहे हैं, टाइप्स भी हैं, कोई क्लासिफिकेशन इसकी? टाइप सर इसकी थी सर, अभी सर ध्यान में नहीं आ रही. ठीक है. अच्छा, आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे फर्दर पेशेंट को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर यानी कि इसका हम कैरोटिड एंजियोग्राम और सर वैसे तो बेसिक नर्सिंग स्टार्ट करेंगे सिटी एमआरआई एंड देन सर कैरोटिड एंजियोग्राम और डीएसए. सिटी में क्या देखना चाह रहे हैं आप? सिटी सर देखना चाह रहे हैं कि कोई किसी वेसल की वजह से तो नहीं हुआ. राइट. हाँ सर. सिटी एंजियोग्राम में क्या देखेंगे आप? सर सिटी एंजियोग्राम में कि देखेंगे कि किसी वेसल की यानी कि वेसल का ट्रॉमा है, कोई एनोरिज्म रप्चर हुआ है या उसकी वजह से है. ठीक है. या और कोई. ओके. अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है इसमें? सर वो डीएसए सर. एंजियोग्राफी करवाएंगे. ठीक है. एंजियोग्राम. एंजियोग्राफी में कोई मनूवर्स करते हैं हम सीसीएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से सर लीकेज है? मतलब इसमें सर प्रोलॉन्ग्ड आर्टीरियल फेज होता है. कोई मनूवर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द एंजियोग्राफी? सर मेरे जेहन में नहीं आ रहा, आई थिंक सर ये अपना आर्टीरियल फेज का थोड़ा था मुझे कि आइडिया पर लॉन्ग आर्टीरियल फेज. राइट. अच्छा, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, first of all, sir, I will admit the patient in the ward and sir, and start the conservative treatment like painkillers and then sir cover the eye, cover this left eye, and sir then I will investigate the patient and all the like not available from starting from the basic CT brain plane, then and sir after this MRI brain with the IV contrast and orbit protocol, MRI brain and orbit,
and then sir CT angiogram, and after that for proving DS. Then sir I will attend call from the from endovascular, that if there's any procedure like for the embolization or sir and after this there endovascular procedure, then the surgical procedure is अच्छा, एम्बोलाइजेशन के लिए अप्रोच कहाँ से करेंगे, कौन सी वेसल से? सर एम्बोलाइजेशन के लिए सर नॉर्मली तो कैरोटिड से सर। और अगर कैरोटिड से ना कर पाए तो? कैरोटिड से ना कर पाए तो सर दूसरा एक फेमरल वाला है सर वे। कहाँ से? फेमरल सर, फेमरल से। फीमोरल तो काफी दूर पड़ेगी। या सर दूसरा अपना रेडियल सर है, रेडियल से। ओके, ठीक है डॉक्टर हारून, you were good. Apart from the classification, which is very important, सर एक्चुअली ना अभी ना रिवाइज करने वाली थी, मैंने ये पढ़ा हुआ था लेकिन वो अभी ना रिवाइज करने वाली तो सारा मिक्स हो गया। जी जी, नहीं, you were good. You picked it nicely. So you described the findings, you diagnosed it correctly. Causes आपने इसके बता दिए. It could be traumatic, ruptured aneurysm, any tumor that is causing the damage to the artery. How you are going to manage it, आपने बिल्कुल सही बताया. इंटरवेंशन के ऑप्शंस इसमें we go for the embolization, and embolization के usually use the internal carotid. अगर internal carotid नहीं use कर सकते तो we use the branches of the external carotid. External carotid से भी नहीं कर पाते, then we go for the venous. Only then we go for the venous. Venous में जो है chances कम होते हैं, 20% success rate होता है as compared to the arterial. उसमें जो है हम ophthalmic vein यूज कर सकते हैं, which is the nearest one, but again it's a very narrow corridor, so उसमें chances of complication are more. अच्छा, इसमें हम दो maneuvers करते हैं. Let me show. Okay, these are the types of the carotid cavernous fistula. It can either be direct. Direct में आ जाता है A, when the internal carotid artery से directly there is the leakage of blood in the cavernous sinus. Type B, C, D are all considered indirect ones, or the low flow fistulas. In type B, again, there is the leakage from the internal carotid, but not directly from the carotid, but from any smaller branch of the carotid. Whereas in the type C, from the external carotid artery की किसी branch से there is the leakage. Whereas in the type D, the leakage is either fistula is from both the internal and external carotid artery की branches से होता है. But all these type B, C, and D are low flow. In case of the low flow fistulas, it can be left conservatively, and 50 to 60% of the patients are going to improve. Again, there are certain indications when you need to go for the surgery. Obviously, if it is the high flow, if the patient's vision is being affected or the extraocular movements are affected, in that case, you need to address it and go for intervention. Intervention के लिए embolization is the gold standard. While performing the angiography, there are two maneuvers. One is the Huber maneuver. Huber maneuver में हम क्या करते हैं कि the इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है हम उसको प्रेस करते हैं, एंड द डाई इज गिवन फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी. रिट्रोग्रेडली हम उसको फॉलो करते हैं एंड वी सी वेयर इज द लीकेज पॉइंट, और हम छोड़ते हैं कि इंटरनल कैरोटिड को सेम साइड की वो रिफिल करें. व्हाइल रिफिलिंग इट वील सी द फिस्टुला की लीकेज पॉइंट कहाँ से है. There is another maneuver, that is the Mehringer Heshima maneuver. इसमें हम क्या करते हैं कि we give the dye in the internal carotid artery, whereas जो common carotid artery है उसको हम compress करते हैं ipsilateral same side की. तो जो हम dye दे रहे होते हैं internal carotid artery से, तो it is going to directly show us कि कहाँ से fistula बन रहा है, and it is going to confirm us the exact position of the जहाँ से dye leakage होगी, मतलब that is the point जहाँ से fistula बना है. So both of these are going to help us in the management and further planning.
Both of these stations were less common, इतना frequently आती नहीं है, but again these are very two important one potential stations जो exam में आ सकती हैं. Okay, we have two short cases for today. Both are very important and very interesting short cases. Okay, so who is going to attempt the first short case? Anyone who has not participated yet? It's an easy one. Any volunteer? I'll do it, sir. Okay, okay. Dr. Atia? Yes, sir. Okay, all right. So let's do it. Yes, sir. Kindly examine the face of the patient. Tell me the points, Okay. important points that you are going to look for. After introduction, consent, I'll look at the face from front, on from the side, and from in the superior view. And then I'll start with the examination of the examination of the eye. With the first, I'll palpate it, then see the temperature, pressure, two finger tonometry, and if it's compressible, non-compressible, pulsatile, cuff impulse, and then check the bruit, look at the bony orbital margins. Then I'll measure the interpupillary distance, and then forward protrusion compared to the other one, and then visual acuity bilaterally, extraocular movements, and fundoscopy. Then I'll check the nose, oropharynx, and facial nerve, trigeminal nerve. Yes, sir. And then pronator drift and planters. All right. So you were excellent. Can you tell me why were you checking the nose? I mean, what could be the important things that you If any that can fungal give you a clue? infection, we suspect that since it seems like a case of proboscis, so it can be any fungal infection, mucormycosis. We'll see a black suit in black mass in the nose or oropharynx. Okay, apart from the infection of the fungal mass, what other potential diagnoses are coming in your mind on the basis of examination? Well, it depends. It's a pulsatile or a non-pulsatile proboscis. It's a non-pulsatile proptosis. Okay, then it's most likely more commonly a neoplastic region. It can be starting from eye, going behind optic glioma, optic nerve meningioma, schwannoma, then posteriorly we go sphenoid wing meningioma, and these are commonly in the neoplastic. Less likely Graves' disease or pseudoorbital tumor. Right. So what important points in the examination are going to give you clue regarding the localization of this particular tumor? Oh, first, if it's a pulsatile or non-pulsatile, and axial, non-axial proptosis, and whether there was any pain involved or it was painless. Other than that, any history of immunocompromised patient? cranial nerves की involvement, वो कोई clue देगी आपको? Yes, if it's involving the cavernous sinus, then cranial nerve, there will be ophthalmoplegia, and along with that, decreased sensation in V1 and V2.
Okay, so you also want to check completely the trigeminal nerve and particularly facial nerve as well Yes, in sir. the examination of the Yes. face. Okay, how you will proceed? Okay, we would like to order the targeted specific examination investigation like MRI brain and fat suppression images along with orbit. MRI brain and orbit fat suppression images. All right, so let's see the MRI of this patient. Can you read the Okay. MRI, interpret it? Yes, sir. On the base. Okay. On the right side, we have a MRI brain, T1 weighted image with contrast, axial cut. It's showing a homogeneously enhancing lesion, which is well circumscribed and is involving the arising from the base of the skull and involving causing a compression on the temporal क्या बोलते हैं, temporal lobe and also on the extending into the optic and extending across the optic canal. On the sagittal cut, the lesion has a dural tail attachment and has a dural tail sign, and it's arising from skull base. Anterior crane, not the cranial fossa. I cannot read that sagittal image very properly. Okay, so we need to see the other cuts as well to see where it is originating from. Yes, sir. Okay, let me make it a bit easier for you. If it is arising from the sphenoid wing, Yes. how do you classify the tumors arising from the sphenoid wing? So the broadly classification, it has unclick meningioma and globoid meningioma. Then globoid is further divided into three, inner clinoidal, then alar, and then we have a trional meningiomas. All right. So इसमें और कोई investigation आप करवाना चाहेंगे apart from MRI? I would like to see the CT, brain, and I also like to order angiogram. CT में क्या देखना चाह रहे हैं? Bony involvement. Since I'm suspecting it to be meningioma, it will cause, and it's more on the medial side, it will cause hyperostosis of the sphenoid wing and anterior clinoid process. It will help me deciding the surgical plan. एक और important चीज आपने देखनी है CT scan में? Hyperostosis of the bone and कौन सी bone की? sphenoid wing and anterior clinoid process. Sphenoid भी देख लिया. Yes. Orbit की roof. Orbit, sorry. Orbit की roof check करनी है कि कितनी involvement है उसकी. Okay. अच्छा, angiogram में क्या देखेंगे आप? Vessels. Vessels, yes. Okay. उसका क्या advantage है? One, it will tell us about the blood supply Right. and any surrounding vessels which we have to see during surgery. Since it seems like it's very close to the clinoid. And there we have cavernous sinus and all the small and vessels like ACA branches. So we have to preserve those branches. Okay, so how you are going to treat this patient? Since, can I see this? The patient has a vision loss or the vision was intact? Patient's vision is intact, but the ocular movement is affected. Okay, first I'll consult the patient regarding the disease, and we have to tell them that there is a tumor and we need to operate it. I'll admit the patient, get the baseline investigation, prepare the patient for the surgery, and we will go for the surgery. In this, should I tell you the approach? Yes. Okay, we will go for the trional approach, and along with the deroofing of the superior orbit, along with the deroofing of the orbit and an anterior clinoid process removal for the complete dissection of the tumor. जो आप बता रहे हो ट्रियोनल अप्रोच प्लस उसमें आप Okay. ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई स्पेशल नेम देते हैं हम इस अप्रोच को? Trional along with OZ, orbital zygomatic OZ removal. Okay, so tell me the steps of the surgery. Okay. We have to, after cleaning and draping, intubation, the patient will be in supine position with head elevated slightly and turned towards the right side. And after my cleaning, draping, we will give us incision, starting in
starting 1 centimeter anterior to the tragus, going upwards and then towards the slightly crossing the midline. And after the skin flap will be raised in 2 flaps. First is the skin and subcutaneous fat along with fascia, and then muscular flap. Skin flap will be reflected anteriorly, while the muscle flap will be directed downwards to provide the better exposure. Then doing the triogonal craniotomy with the 2 burr holes, one superior to the root of zygoma, other at the level of McCarthy burr hole. We will do the craniotomy. Then after the and along with that, we can do 1 step Where do posterior, you 2 step. where do you do the McCarthy burr hole? It's Can you tell me 5 the mm. landmarks? Yes, it's 5 mm posterior to the frontozygomatic suture along the at the junction of frontozygomatic suture with the superior temporal line. 5 mm posterior to it. राइट, ठीक है। अच्छा, 2 बार करेंगे और फिर आप उसको क्रेनियोटमी करेंगे प्लान। Along with the removal of the orbit. What is the intraorbital advantage cord. of McCarthy burr hole? It helps in reaching the base of the sphenoid easily after removal of it. और कहाँ जा सकते हैं आप McCarthy burr hole से? Orbit. We can use it to remove the assess the orbit. So that is the main advantage जो यहाँ पे हम perform करेंगे. Along with the middle cranial fossa, anterior cranial fossa, we can also go into the orbit as well. Okay. After doing the craniotomy, what would be the next step? Extradural dissection of the sphenoid base, and along with the removal of anterior clinoid process. And then once the clinoid process is removed, orbit is deroofed, all bony work is done, we will open the dura in a C-shaped manner with the base towards the with the base of dura towards the base of the skull. And after that, we will do the sylvian dissection and open the sylvian by preserving the neurovascular structures and approach the tumor. We will start the external debulking by cauterizing the tumor capsule and internally debulking while devascularization and dissecting the tumors from the surrounding. And once the tumor capsule has been totally detached, we will approach the medial side of the tumor. If it's adherent to the important neurovascular structure or sinus cavity, then we will leave a cuff of a tumor attached to it. Otherwise, if it's easily removable, we'll remove it. And then we open the dura over the, then we approach the orbital part of the tumor. We have already removed the orbital wall, and we will start removing start debulking the tumor and removing the capsule of the tumor from the optic nerve. In a peel-off manner, we will start peeling it off. And once the tumor is removed, we have to secure the hemostasis and then close the dura in a watertight fashion and replace. If there a bone has involved and hyperostosis, we drill it and then drill the hyperostotic part and then replace the bone with the titanium mini plates and screws, and then close the skin in the eye muscles in the reverse order. We will place an extradural drain. Okay. So what could be the complications of this procedure? Intraoperative, we can damage the surrounding neurovascular structure, like the damage can be to the optic nerve during the anterior clinoid process drilling, thermal injury, and any vascular injury to the vessels, and excessive retraction on the lobes can result in the contusion. And post-operative patient can have hematoma. Not incomplete closure of the dura can result in CSF leak, excessive retention, and contusion later on result in a seizure. And skin, these are all common. In skin infection, wound infection. All right. So you were really good, Dr. Atia, and you answer all the questions very fluently, very nicely. Just a few suggestions. When you say कि हम incision देंगे इसको, rather it would be very nice and बड़ा एक अच्छा आंसर लगेगा if you say कि we'll give the unicoronal hairline incision. And फिर उसकी आप dimensions बता सकते हो कि the starting point would be in front of the tragus and crossing the midline and all. अच्छा, दूसरी चीज के वर्कअप में ophthalmological workup was very necessary and important. जैसे आप मुझसे vision पूछ रहे थे, तो before going for the surgery, it's very important ophthalmological workup करवाना to look for the patient की vision कैसी थी before the surgery. Otherwise, you were really good and you covered almost all the important aspects of the surgery as well. Okay, thank you. So these are the examination points important from the when you do the examination of the eye, particularly the proptosis.
and most of the things already Dr. Athiya has told. You can read this slide later on. So practice more and more on the patients, not just reading, but start performing on the patient as well. Because यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए ट्रिकी है बिकॉज जो कमांड थी स्टेशन की दैट वाज एग्जामिनेशन ऑफ द फेस एंड यू सी देयर इज द प्रोप्टोसिस एज वेल. तो अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं टू एग्जामिन. First, start doing the examination of the proptosis and then come to the rest of the face, or do the examination of the face and then come to the proptosis. What I would suggest or advise is to better go for the examination of the proptosis first so that you can do it in detail and do not miss any point. Rest of the face examination you can perform later on. But if you leave any important thing on the proptosis ki examinations mein, so that is a major blunder. और आई की पूरी एग्जामिनेशन जैसे बताई डॉक्टर अतिया ने वो करेंगे हम प्रोक्टोसिस की एग्जामिनेशन लेटर ऑन कमिंग टू द फेस. फेस पे आपने ट्राइजेमिनल फेशियल पर्टिकुलरली दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट नर्व्स. जब आप एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स करवाओगे तो थर्ड फोर्थ एंड सिक्स नर्व वैसे ही आप कवर कर चुके हो. एंड विजुअल अक्यूटी वुड बी कवर्ड इन दी क्रेनियल नर्व नंबर 2. फंडोस्कोपी बताना वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन कमिंग टू दी रिलेटिव एग्जामिनेशन में आपने जो है प्रोनेटर ड्रिफ्ट और पेशेंट के प्लांटर्स देखने हैं. ब्रूई हियरिंग द ब्रूई एंड फीलिंग फॉर द पल्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर इसमें कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना हो पेशेंट से तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विजन आपने पूछना है कि विजन पेशेंट की है या नहीं है और अफेक्ट हुई है तो कितने अरसे से हुई है. सेकेंडली ये जो प्रोक्टोसिस हुई है कितने अरसे से हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Acha, now coming to the frontotemporal orbitozygomatic approach. This is a very tricky approach, especially in the cases of these spheno-orbital meningiomas. They can ask you about this approach. And this basically technique provides the access to the skull base, particularly to the anterior cranial fossa, middle cranial fossa, as well as to the orbit. So this is an excellent approach. This is actually a modified version of diurnal approach. We extend it more towards the frontal side and orbitotomy भी करते हैं हम इसमें. And zygoma can also be removed if the tumor is extending too much downward. So indications are the large medial sphenoid wing or spheno-orbital meningioma. Supracellular or the paracellular tumors can also be addressed with it. Lesions at the orbital apex or in the third ventricle, and the anterior communicating artery or the basilar trip aneurysm can also be approached through the, basically it's a modified version of diurnal approach. So when you want to extend more towards the frontal side or downwards going into the zygomatic region, वहां पे हम इस approach का नाम लेते हैं. The most important one is the key burhole. Key burhole here it is also known as the McCarthy keyhole. Burhole इसकी dimensions पूछ सकते हैं. It is just 5 to 9 centimeter, 5 to 9 millimeters, sorry, behind the frontozygomatic suture. यहाँ पे frontozygomatic suture के 5 to 9 millimeter behind, and below यहाँ पे हम perform करते हैं key burhole, which gives us the access to the orbit, to the anterior cranial fossa as well as to the middle cranial fossa. इसको फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं. लेट्स सी इफ आई हैव द पिक्चर. ओके, सो द फर्स्ट बरहोल यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज द की बरहोल. सेकंड बरहोल यू आर गोइंग टू मेक in the on the frontal side just above the orbit. It depends upon the extent of the tumor. यहाँ पे जैसे हमने पास द मिड लाइन लेके आ गए हैं ऑर्बिट के, it depends upon the, there's no fixed point for it, depends upon the extent of the tumor. एक बरहोल हम ऊपर यहाँ पे करते हैं. अच्छा, जैसे डॉक्टर अतिया ने बताया कि दी मस्कुलर फ्लैप वुड बी टेकन डाउनवर्ड्स. व्हाई नीचे की तरफ हम इसको करते हैं? बिकॉज टू मेंटेन इट्स ब्लड सप्लाई ऑफ द टेम्पोरलिस मसल. जो चौथा पर हम करते हैं, इट इज जस्ट अबव द zygomatic आर्च बेस पे टेम्पोरल की. This is the real-time picture जिसमें ये दिखाया गया है कि muscle flap that has moved downwards. और यहाँ पे जो ये this depressed part आप देख रहे हैं, यहाँ पे you are going to make up the first burhole, that is the McCarthy or the key burhole.
Once you lift up the bony part, जो bone हमने raise कर दी है, you are going to see a wide exposure. Here you can identify the structure. This is the frontal lobe. यहाँ पे हमने de-roofing की है orbit की, and you can see the eyeball here, Selvian fissure, and the temporal lobe. So a tumor that is extending into the frontal, temporal, as well as to the orbital sphenoid wing meningioma that can easily be approached by this. Regarding the resources, Al-Mafti में chapter number 26 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है spheno-orbital meningioma. In chapter number 25, that is I guess clinoidal, उसमें surgical approach बड़ी अच्छी बताई गई है इसकी regarding the pterional approach. Again Greenberg में chapter number 46 and 106 chapter जो है उसमें surgical approach pterional explain की गई है. ये यहाँ पे एक मैंने link share किया है. This was a very good informative video जिसमें बड़ा briefly step by step बताया गया है कि how do you perform the pterional or the frontotemporal orbitozygomatic approach. Which brings us to the last station of not only the day but of this course as well. And so again, this is an easy station but very important one from the exam point of view. So anyone want to volunteer for it? Dr. Aisha, Dr. Tayyaba, Dr. Sidra. Dr. Prakash, are you going to do the last station again? Dr. Ajit? Dr. Harun? Yes, sir. Oh, okay, Dr. Harun, if no one is doing this station, would you like to do the last station of this course? It's going to be Yes, a sir. big, No problem. No problem. it's going to be a big honor. So with a very heavy heart, let's move towards the last station. Do the examination of the face of patient. Okay, sir. First of all, sir, we will introduction and greet the patient, and then, sir, after taking consent, we will start examining the face first from the front, and sir, if there is proptosis, so that's why we have to see from the back and from the sides also, and then, sir, we will after inspecting, then we will palpate the fossa, like if there is a acromegaly or the proptosis. So according to the anomaly, we have to change our command. So, sir, if there is acromegaly, then we have to measure intercanthal distance. And sir, if there is a proptosis, then we will have to measure from the one eye and then compare this from the second eye. And then, sir, we will start the we will check the star shape for the proptosis, that either it is axial or non-axial, axial or extraxial for the proptosis. And then, sir, we will move to the first screen. Sorry. And so also one thing I forgot: if we have the facial palsy, then we have to grade that either it is upper or either it is lower. If the upper, then we will start from the to rule out the upper motor neuron type lesions according to this. And if there is a lower motor type, and then we have to measure the lower six cranial nerves.
And sir, actually, sir, I don't know about the exact anomaly, so that's why I'm telling all the things which have to, all the relevant things which have to we have to see in the face. जी जी. And then sir, we have started if for the acromegaly. So first of all, we will see you have to two second crane of 3, 4, 6, and V1, V2, and also the seventh. And sir, in the facial, I already told. And if there's a proptosis, then we have to see second crane of then 3, 4, 6. And after this, sir, now for the relevant examination, I have to see the pronator drift and sir, long track signs, and according to the command. If there is a lower cranial, lower motor neuron, then I have to see the cerebellum signs. Or if there is sir, upper cranium, then we have to see the frontal release sign, parietal sign, and the pronator drift according to the lesions. ठीक है. अच्छा, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी देखी आपने? Sir, I forgot, sir. In acromegaly, we have to see all these things: nasal cavity, oral cavity, tongue, and then sir, then we have to move the other sides, interdental distance, sir, and then according to this, then we move to the heart, like from the head to toe, from the brittle ears, sir, and so dry, of course, hairs. Then in on the heart, sir, auscultation dextrocardia to rule out dextrocardia. Then, sir, abdomen, we have to palpate the abdomen. And then, sir, and also we have to see for the carpal tunnel, retinal and final signs for the carpal tunnel. And, sir, radioradial delay and radioradial delay and radiofemoral delay. Then, sir, we have to move the lower limb. So, lower limb examination, we have to check claudication and stenosis and SLR. Then from the back, sir, I have to I'll ask for the DRE, sir. I have Okay. asked permission for from Coming back to the face examination, a small suggestion, Dr. Harun. Always while doing the even if there is a proptosis or there is a acromegaly or any prominent sign, always check the orifices, the nasal orifices, the oral cavity, and the ears. Sure. Okay. And while performing the palpation, always check the head of the patient if the patient is shunted or not. That is again very important, tricky point that usually we miss during the examination. Yes. Okay. So Dr. Yes. Harun, these are the findings in the patient. Patient has pain on pinprick over the right side of the face. The rest of the examination was unremarkable. क्या diagnosis आ रही है आपके mind में? Sir, pain and pinprick loss, sir. नहीं, exaggerated है. Patient is having exaggerated pain. Sir, ये TGN, sir, right, V1, V2 TGN, sir. आपको TGN लग रहा है ये? Yes, sir. मुझे डिफरेंशियल्स, इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स बताइए TGN के. So important differentials में, sir, hemifacial spasm है, sir. और then, sir, TGN है, sir. Then अपना कोई any other dental pathology, or sir any temporomandibular joint, sir, pathology, and other, sir, dental or any other, sir, oral and maxillofacial related disease, sir. What are the important points that are in the favor of trigeminal neuralgia? How do you diagnose it? Sir, first of all, sir, because the pain is in the, sir, current-like pain, electric shock-like pain over the face or any side, and sir, in the distribution of V1, V2, and V3 nerves, the fifth scale nerve. ओके. और क्या चीजें डिफरेंशिएट करती हैं इसको बाकी पैथोलॉजी से? सर, इसमें बाकी और कोई the patient is has no any other deficit, like ठीक है. special nerve or other thing, only and not only hemiplegia, paraplegia. Okay. What is atypical facial pain? Sir, atypical facial pain is like sir, so it is also the differential diagnosis of TGN. जी जी. उससे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम उसको? Sir, in trigeminal neuralgia, we will give the patient Tegral, and the patient pain will settle down. And if Nice. the patient's pain didn't settle down, then it is atypical facial pain. Okay, that is one. Second differentiating point is atypical facial pain will be constant.
एपिसोडिक Okay, नहीं sir. होता है, जस्ट लाइक द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। Okay, sir. And also, sir, it is not in the facial like trigeminal distribution. It पर्टिकुलर उसकी can be डिस्ट्रीब्यूशन any. नहीं होती है, समटाइम्स V1 V2 में होगा, कभी V1 V3 में होगा, कभी सारे साइड पे होगा। और ऑटोनोमिक Mhm, डिसफंक्शन के भी उसमें फीचर्स होंगे, एक्सेसिव लैक्रिमेशन, क्राइंग एंड ऑल। mhm. ठीक है। अच्छा, हाउ Yes. यू विल इन्वेस्टिगेट, क्या करवाएंगे इसमें इन्वेस्टिगेtions? So first of all, sir, I do this over the city because because sir, if we will Dr. Farooq last time told me that if you know about the exact diagnosis, then you have to say about MRI. But we said MRI in our setup, in our examiner, that they feel mind why you said MRI first. They saying that first say CT initial the basic investigation, and then you have to move forward to the any other side. ओके, सो एमआरआई का एडवांटेज क्या है यहाँ पे? हम सीटी तो करवाएं, लेकिन एमआरआई का एडवांटेज क्या है? क्यों उसने ने कहा डायरेक्टली एमआरआई करवाओ? Take advantage, sir, because sir, we have to see the facial, the like empty cella, empty rule out empty cella, and the sir any tumor of the Gazerian ganglion or any other for the temporal in like middle fossa region, and एम्प्टी सेला यहाँ पे उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है पर्टिकुलरली टू दिस केस, बट जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का नियरेस्ट और द मोस्ट क्लोजली डिफरेंशियल इज द ट्राइजेमिनल schwannoma। trigeminal schwannoma. schwannoma, तो Okay, उसको रूल right. आउट करने के लिए एमआरआई इज द बेटर इन्वेस्टिगेशन। Yes, sir. Yes, sir. सीटी स्कैन करवा के दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अनदर इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद इवेंचुअली आपको एमआरआई की तरफ जाना पड़ेगा टू रूल आउट। Okay, एमआरआई इज गोइंग टू okay. रूल आउट एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें ओके, सो नाउ हाउ यू विल प्रोसीड इन दिस केस? So first of all, sir, we will give the proper LF analgesic. This is sir carbamazepine and oxcarbamazepine, 400 mg. We will start from the 200 to 400 mg. Then we will increase according to the pain of the patient. Maximum dose we ठीक can give 1200 mg for the for the carbamazepine and 2400 mg of oxcarbamazepine. If there's a patient नाइस। pain didn't settle, then we will have go to the second line, sir, which are gabapentin, and sir, which we can give, sir, to 3600 mg, sir, maximum dose. And नाइस, the एक और ड्रग? third line is sir baclofen, sir, which we can give 80 mg, sir, maximum dose, 80 mg per day. नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल सही आपने आंसर किया। इसको आप इस तरीके से जवाब दे सकते थे कि वी हैव टू ऑप्शंस हियर। वील स्टार्ट विद द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में लेट द एग्जामिनर आस्क कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप कौन सी ड्रग्स देते हैं, फिर उसके बाद ही सारा आंसर आप दें। ओके, Yes, yes, नाउ sir. कमिंग टू द इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन के कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास? Sir, for the intervention, sir, we have multiple options. First of all, sir, like there are some blocks, like in the V2, V3, especially territory, we can give the alcohol block, hot water, sir, block, hot water injection, and sir, then the balloon V1 we can ब्लॉक कहाँ also पे करते हैं? V1, लैंडमार्क्स sir, V1 के sir supraorbital, sir. कहाँ पे? लैंडमार्क्स बताइए उसके। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुप्रा ऑर्बिटर रिच पे सर हम करते हैं ना, सुप्रा ऑर्बिटर रिच पे। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियल साइड, फ्रॉम द मीडियल जो वॉल है ऑर्बिट की, उससे 1 to 2 सेंटीमीटर मीडियली जब हम जाए, लेटरली जाएंगे सॉरी, तो आपने फील करनी है सुप्रा ऑर्बिटल रिज। जस्ट वहां पे ओके आप सर। दे सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसी पॉइंट बताएं जहां पे वी कैन ब्लॉक ऑल थ्री, V1 V2 एंड V3। सर सर गिजेरिन गैंग्लियन सर। तो केजन गैंग्लियन को कैसे हम टारगेट करते हैं? सर गिजेरिन गैंग्लियन बेसिकली सर ये ट्रैगस के इंटीरियरली पड़ा होता है ना, तो जी। सर वी विल गो और सर इट इज सियाम सियाम गाइडेड सर जाएंगे हम। सियाम गाइडेड भी जा सकते हैं, बट इसके जो लैंडमार्क्स है यूजुअली वी फॉलो दी जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च को फॉलो करते हुए जाएंगे जस्ट मीडियली, जहाँ पे आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बीच में स्पेस मिलती है, जस्ट बिलो दी जाइगोमेट
जाइगोमा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वहां पे आपने 90 डिग्री पे जो है अंदर इंजेक्ट करना है। ओके सर, ओके सर। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दी ब्लॉक्स, नर्व ब्लॉक्स, और सर कौन से ऑप्शंस हैं? RF सर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन सर। ठीक है, किस पेशेंट में करेंगे, क्यों करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस? सर इसमें ये कि इसमें सर इन दिस सर विच पेशेंट विच डू नॉट विलिंग फॉर सर्जरी एंड ओके, सर आल्सो नॉट ओनली सिंगल नर्व पैथोलॉजी लाइक ओनली फॉर द B2 और B3। ठीक है, वो और वी कौन से विल कैंडिडेट्स होते हैं पेशेंट्स? sir young patient no sir old ठीक है, patients are having comorbidities like diabetes, hypertension, and sir which are not willing for surgery. राइट, ओके। अच्छा, सर्जरी की तरफ आते हैं। सर्जरी में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? सर सर्जरी में सर गोड सिलेंडर सर माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन। एमवीटी के स्टेप्स बताइए। अच्छा, MVD sir, we first we will admit the patient, and after the anesthesia draping a position, so we will make two positions like a park bench or the right or left lateral, sir, lateral position. And so in park bench, sir, we will do incision like retrosigmoid, lazy S incision behind the pinna, sir. It is actually for like sir, 2 centimeter above, one third, sir, above and two-thirds below from the from that junction. From राइट, the junction, it is a transverse sinus. And first of all, we will mark the transverse sinus, midline transverse sinus, and then we will mark our incision 5 centimeter behind the pinna, राइट, behind the tragus, and so one third above the transverse sinus, and two-thirds below the transverse sinus. Then after sir, giving the incision subcutaneous dissection, we will periosteal dissection. Then sir, we will identify the asterion, and sir, after identifying, sir, we will give the first burr hole to the asterion, and then after this, sir, we can increase our conductomy like sir, 3 into 3 centimeter subocciput, 3 into 3 centimeter sir, conductomy, and sir, after that, we will sir, we will durotomy, sir, curvilinear durotomy, and sir, after we give Duracid, then we will start draining the CSF from the seeping assistance, or either sir, if the brain is tight, then we can take from the cisterna magna. And so then after sir, then we will slowly sir retract the cerebellum, retract the cerebellum, and then sir we will take the microscope in, and sir after then sir we will slowly drain the CSF, and then we will reach to the neurovascular bundle. First of all, sir, our in this incision, sir, seventh, eighth nerve complexes will come first, and so then a little bit interior we will find anterosuperior, we will find the fifth cranial nerve, and so then we will identify the loop of vessels, sir, which is most probably superior cerebellar, sir, and the other ones also. Then sir, we can separate, we will separate the superior cerebellar from the trigeminal. So then we will put any like telfa dressing or Surgicel or anything, sir, which is sterile, where we can put in between the trigeminal nerve and superior cerebellar. And then after that, sir, we will check the hemostasis, and sir, we will then in the so we will close the dura and close the wound in the reverse order. ओके। यहाँ पे कोई वेसल या वेन जो आपको तंग करे कि जिसको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो? सॉरी सर, शुरू में बोल गया था, शुरू में सर एक तो मिशली वेन्स आएंगी कनेक्टिव में सर, उसको हम हाँ, बोन वैक्स करेंगे, और ठीक है, नीचे सर पेट्रोजल वेन सर। पेट्रोसल वेन आपको तंग करेगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताया, लास्ट बोनस क्वेश्चन है डॉक्टर हारून, कि आपने एमबीटीबी की है पेशेंट सॉरी की, सर, बट आपकी बात नहीं सुन लगी सर। आवाज आ रही है आपको डॉक्टर हारून? जी अब आ रही, जी अब आ रही सर, यस सर, आवाज आ रही है? सो दिस इज अ यस सर, आ बोनस रही है सर, क्वेश्चन। आ रही, जी सर, आपने पेशेंट की एमवीटी की है, बट स्टिल द पेन इज नॉट रिलीव्ड। अब क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? सर एक्चुअली इट इज सर वेरी लेस कॉमन, बिकॉज सर इन दिस प्रोसीजर सर इट हैज 99% प्रोग्नोसिस, बट आई एम बट सर टेलिंग इफ यू कि द पेशेंट स्टिल हैज पेन।
So then we will do, sir, any other procedure like RF. We can give RF or neurectomy. न्यूरेक्टमी कहाँ पे करेंगे? सर वो जो जो लीजन है सर, अगर V2 है, V3 का लीजन है, तो जिस जिस टाइप का लीजन सर, और कोई तो प्रोसीजर स्नैप जो हम कर सकते हो अभी पेशेंट में? और सर इसमें सर वो है लीजनिंग से, इससे हम ये कर सकते हैं स्टीरियोटैक्टिक सर, स्टीरियोटैक्टिक SRS। एस आर एस इज बेसिकली, अगर एस आर एस फेल होता है तो वी कम टुवर्ड्स द सर्जरी, और सर्जरी के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी की इतनी कोई वैल्यू नहीं है स्टीरियोटैक्टिक की। फिर सर इसके अलावा भी जेन में नहीं आ रहा। जो रिट्रो गेजेरियन अप्रोच है, उससे गेजेरियन की हम सेक्शनिंग करते हैं वहाँ पे सेंसरी सप्लाई की। होता ये है कि जो आपका गेजेरियन गैंग्लियन है, या सॉरी बेसिकली सर, सॉरी, पोर्शो मेजर, पोर्शो माइनर, वो पूछना चाह रहा पोर्टियो हूँ। माइनर और पोर्टियो मेजर। पोर्शो मेजर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो पोर्टियो मेजर बेसिकली इज द सेंसरी पार्ट, बट द पोर्टियो माइनर उसके साथ भी फ्यू सेंसरी नर्व्स आर ट्रेवलिंग, सही सर, श्योर तो सर। उसके लिए हम सेक्शनिंग करते हैं गेजेरियन गैंग्लियन की, बट इट्स अ वेरी एक्सट्रीम प्रोसीजर। मुझे ये बताएं कि स्टीरियोटैक्टिक में वेयर डू यू टारगेट एंड व्हाट आर द डोजेस, कितनी रेडिएशन देते हैं वहाँ पे? सर एक ट्राइजेमिनल ऐसी सर, अभी एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं डोजेस, लेकिन सर वो एटी वही 2 to 3 ग्रे सर, फ्रैक्शनेटेड फ्रैक्शन देते हैं, 2 to 3 ग्रे सर। 80 to 90 ग्रे इसमें हम डोज देते हैं। टोटल डोज सर? जी जी, ओके 80 to 90 डोज हम देते हैं। ओके, सो डॉक्टर हारून, यस, really nice and well done for the थैंक यू, थैंक station. यू सर। Okay, so face examination we have discussed it multiple times. अभी मैंने कुछ चीज़ें important बता भी दी इसमें। Coming to the differentials, इसमें important one is the atypical facial pain which remains constant, and autonomic dysfunction भी जिसमें होता है, and pain that does not respond to the carbamazepine. You have to think about other possibilities, जिसमें neurological deficit आ जाए, you have to think about the trigeminal schwannoma. This is the distribution of the three nerves V1, V2, V3. V1 का जो block हम करते हैं just above the eyebrow on the medial side, lateral side from the medial wall, 1 to 2 centimeter, यहाँ पे हम टारगेट करते हैं। V2 का ब्लॉक विच इज वेरी लेस कॉमन, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में हम यहाँ पे देते हैं। ये V1 की पोजीशन है। कमिंग टू द कैजेरियन ब्लॉकेड, ये जो हम करते हैं जस्ट बिलो द zygomatic bone, दिस इज जस्ट बिलो द zygomatic bone, दिस इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे जो बना है इसके बीच में यू कैन फील अ बिट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फील होता है, वहां पे आपने जाना है 90 डिग्री पे, एंड यू कैन गिव द एजेंट फिनॉल और द अल्कोहल। Another option is there, supraorbital neurectomy कर सकते हैं हम, but again this procedure will only be performed in those patients who are not fit to go for any kind of a invasive procedure, जिसमें हम MVT नहीं कर सकते, उसमें हम ये करते हैं। इसमें फिर इसकी complication पूछते हैं, most important one, that is the keratitis and how can you prevent it by giving the artificial। इसमें ग्रीनबर्ग का chapter number 112 और पेज नंबर 519 पे देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल्स ऑफ द फेशियल पेन। उसमें फिर ये पूछा जा सकता है कि V1 में अगर पेन हो रहा है तो उसके क्या डिफरेंशियल्स हैं, रामसे हंट सिंड्रोम, बहुत सारे इसमें जो है डिफरेंशियल्स दिए हुए हैं। जो हर्पीस का पेन होता है, एटिपिकल फेशियल पेन हो गया, डेंटल पेन हो गया, सो वो थोड़े से आप देख लीजिएगा। सो it brings us to the end of the session. Dr. Majaving? जी डॉक्टर बाबर। Okay, so let's conclude the session. अभी क्या दुआ हुआ पढ़नी है, क्या करना है? बड़े हैवी हार्ट के साथ, एंड लेट्स विश सबके लिए, जी सबके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और बहुत मज़ा आया, एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई सारे कैंडिडेट्स के साथ।
wish you all best of luck और थैंक यू hopefully सर, थैंक यू। हमारा ये जो छोटा effort था, this is going to help you people in attempting the exam. इंशाल्लाह ताला। सर किसी नाइस को नंबर सर, कुछ शेयर सर कर दीजिएगा पीडीएफ्स ना। वो मतलब शुरू कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किए शुरू वाले सेशंस, तो कह रहे हैं कि जी पीडीएफ्स आ रहे हैं ना, इनकी शेयर कर दीजिएगा। तो सर मैम एक और चीज़ पूछ रही थी कि इसका जो लिंक है वो यूट्यूब पे अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट लिंक नहीं आता इसका ना। डॉक्टर हारून, आप अगर फॉलो करेंगे डॉक्टर मेहजबीन को या मुझे, हमने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है एग्जिट एग्जाम का, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 6 आज की जो है, अभी हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे उसमें। वो जिस तरह डॉक्टर फारूक का है ना कि पेज और जेपीएमसी वाला, उस पर सारी वीडियो साथ साथ शो हो रही होती है ना। जी, मैंने एक फोल्डर बना दिया है उसमें, डॉक्टर मेहजबीन ने भी शायद फोल्डर बनाया है, थैंक यू सर। न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी एग्जिट एग्जाम के नाम से। if anybody has to say anything, any comments, any feedback, you're more than welcome. Okay then. बाकी बस टिप यही है मैम, हमारा भी एक्चुअली एग्जाम लेट है, तो अभी जिनका करीबन करीब 5 वक्त की नमाज पढ़े, उसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, 2 नफल सलातुल हाजत के, और अपना जो कुछ दुआएं हैं जो एंजाइटी के लिए बचने के लिए जो है ना, वो यही चीज़ें हैं उसमें। बाकी जो किस्मत में लिखा हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला सबको मिलेगा। आमीन। टाइम जो है ना वो अल्लाह ताला को पता है, तो बाकी कोशिश तो हर बंदा ही करता है। Let me ask Dr. Atia, who has already passed her talks, and if Yes, she could respond how good our session was. Actually, it's a feedback system, so it's there is obviously room for improvement. So if you would like to comment कि कौन सी चीजें अच्छी थी session की या कौन सी lackings थी, which we can improve if we go for the session again for the next year. सर इट वाज वंडरफुल। मतलब जब हमने लास्ट टाइम तैयारी की थी तो हमें टॉक्स वगैरह का आइडिया नहीं था, इतना हम खुद ही पढ़ रहे होते थे और रैंडम बुक्स देख रहे होते थे। तो अभी जब मैं देख रही थी तो इनको एक कॉम्पैक्ट सब कुछ मिल रहा है। ये सारी चीजें अपनी दफा में जैसे आप लोगों ने भी हर किसी को खुद ढूंढनी पड़ती थी, तो टाइम की काफी इन लोगों का इसमें सेव हो गया, इन्हें आइडिया हो गया कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। और नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लें कि जैसे ट्यूमर्स को बजाय 1-2 सेशंस के हम 3 सेशंस में कर सकते हैं, डीजेनरेटिव और ट्रोमेटिक स्पाइन सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ है कि वो 1-2 लॉन्ग केस में कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल करते हैं सारे लोग, हिस्ट्री हो जाती है, एग्जामिनेशन भी हो जाता है, फंसते हम डिफरेंशियल्स में, क्योंकि समहाउ सम वे जब आप लेते हो हिस्ट्री आपको समझ आ जाता है कि मसला ये है। अब एग्जामिनर आपको कह रहे थे कि नहीं मुझे ये जस्टिफाई करो कि आप ये क्यों सोचो ये, और मुझे हर हाल में 3 डिफरेंशियल्स दो। कई बार डिफरेंशियल नहीं, कोलॉइड कोलॉइड है, उसकी हिस्ट्री में बस लग रहा है कि कोलॉइड है, लेकिन नहीं, वो कहेगा आप जस्टिफाई करो। तो इस चीज पे मैं खुद भी अभी तक पर्सनली स्ट्रगल करती हूँ कि मुझसे डिफरेंशियल्स नहीं बनते हैं। बस मुझे क्लियर कट 1 या 2 बातें लग रही होती है कि ये है, और उससे आगे मेरे ब्रेन बस स्टक हो जाता है उस पर। तो मुझे, और स्पाइन, स्पाइन में हम लोग सब मतलब आना, मुझे लगता है करना सबको आता है स्पाइन, लेकिन जब हम, क्योंकि स्पाइन में कोई रूल्स नहीं है, हर किसी की अपनी अप्रोच है। एक बंदे को आप बोलोगे टीलेफ करना है तो दूसरे कहेगा नहीं टीपीएफ कर दो, वो उस ज्यादा बेहतर है। बुक वाली बात कोई सुन, जब पेपर हो रहा होता है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस पे भी जा रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर हम नेक्स्ट टाइम जरा सा आप लोग कोर्स जल्दी स्टार्ट कर लें तो मल्टीपल सेशंस हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी इट वाज रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। It was a pleasure. Thank you, Dr. Atya. If we'll obviously it was our first course, so it was kind of फिर भी हमने बहुत ज़्यादा organize करके चलाया है, but still obviously जब स्टार्ट किया था हमने, so we are just waiting for the theory result. तो थ्योरी का जैसे ही रिजल्ट आया, जब जैसे कहते या जिनको आइडिया हो गया कि अब हम जो है वो एग्जाम में अपेयर होने, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता थ्योरी का तब तक लोग जो है वो प्लस माइनस होते हैं स्टार्ट करने के लिए। मतलब वाइवा की प्रिपरेशन काफी लोग तो कर देते हैं स्टार्ट, आइडियली कर भी लेनी चाहिए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए हमने कहा जब रिजल्ट आ जाए थ्योरी का तो उसके बाद कोर्स स्टार्ट करें, ताकि हर कोई एक क्लियर विजन के साथ जो है वो
ज्वाइन कर सके और प्रैक्टिस कर सके उसी मतलब जज्बे के साथ। तो we'll see that, we'll try कि थ्योरी जैसे ही हो जाए हम उसके फौरन बाद स्टार्ट कर दें rather than waiting for the result। बाकी यस ट्यूमर्स में जो है वो we'll make it, जो चीजें हम लॉन्ग केसेस में कवर नहीं कर पाते ऑब्वियसली, अगर हम इवन 6 के बजाय 8 मॉड्यूल्स भी करते हैं तो फिर भी लॉन्ग केसेस हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 और बढ़ा सकते हैं ना। सब चीजें लॉन्ग केस में नहीं हो पाएंगी कवर, तो इसी वजह से इफ यू नोटिस केयरफुली कि हमने हर मॉड्यूल में 8 टॉक स्टेशंस, 4 शॉर्ट केसेस, 2 लॉन्ग केसेस। ओके, तो दैट मेक्स अबाउट 14 टॉपिक्स। तो हमने 14 टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। तो उसको हमने अलग अलग तरीके से, इवन जो हम टॉक्स भी करवा रहे हैं उसमें भी हम वो टॉपिक मोर और लेस पूरा कवर कर रहे हैं। जो शॉर्ट केसेस कर रहे हैं उसमें भी टॉपिक वो पूरा कवर हो रहा है। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम ये है कि ऑब्वियसली वैरायटी रखेंगे। नेक्स्ट टाइम ये होगा क्योंकि अब ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आप लोग बार बार भी देख सकते हो। दूसरा ये कि जो लॉन्ग केसेस अब इस दफा हुए हैं, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ताला जो लॉन्ग केसेस इस दफा कवर नहीं हुए हैं वो हम फिर टॉक्स और शॉर्ट केसेस में वो अलग पूरा उसका जो है वो सारा हम करेंगे। वो लॉन्ग केसेस रिपीट नहीं करेंगे जो अभी हमने इस मॉड्यूल में किए हैं। तो ये एक डिफरेंस है, बिल्कुल वो कर सकते हैं, बट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन ओनली लॉन्ग केसेस दैट वुड बी practically very like next to impossible. So but we'll obviously work on it, and inshallah we welcome you all to give your opinion, give your feedback, or even if you can make a 1 or 2 minute video on how your preparation changed on this by this course, or what improvements that you want. So it would be very helpful for us, or you can if share it right now. अच्छा, रिगार्डिंग द डिफरेंशियल्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे होता है कि एग्जाम से पहले हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स हर कोई देख रहा होता है। लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल कि हमारा जो इस्लामाबाद में एग्जाम था, तो आई वेंट टू पिम्स, वहाँ के सारे पेशेंट्स देखे हुए थे, सीएमएच के सारे पेशेंट्स देखे हुए थे। आई हैड द डायग्नोसिस इन माय माइंड। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि व्हेन यू हैव ऑलरेडी सीन द पेशेंट तो आप एक डायग्नोसिस अपने जहन में बना लेते हो सॉलिड। जैसे सर गौहर जावेद का जो सेशन आपने अटेंड किया हो, तो उसमें सर वाज अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि जो इवन इफ यू नो कि दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट, पर जो मोर कॉमन डायग्नोसिस है वहाँ पे वो आप रखो। लाइक फॉर सपोज अगर ये टीबी इज मोर कॉमन तो आप टीबी ऊपर रखो। मैट्स जो है इफ इन अ पर्टिकुलर केस इट इज लेस चांसेस, बट आपको पता है कि वो मैट्स है, इवन दैट फिर आप उसको सेकंड डिफरेंशियल पे रखो। देन उसको आप डिफेंड करके जब ऊपर लेके आओगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, तो एग्जामिनर वुड बी हैप्पी कि आपने जो है डिफरेंशियल में मोस्ट कॉमन जो है वो टॉप पे रखा था। सो दिस इज दी वन टिप कि एक जो है अपना माइंड किसी भी एक डायग्नोसिस पे ना बनाए, कीप इट फ्लेक्सिबल, और जिस तरीके से मोर कॉमन जो डिफरेंशियल्स हैं वो आप टॉप पे लेके आ जाएं। जी सर। ओके, सो इफ जी जी डॉक्टर हारून। नहीं कुछ मैं जी, थैंक यू सर। Okay, so I think we should wind up. Inshallah, wish you all best of luck, and inshallah, hoping to seeing you all pass. And बाकी कांटेक्ट अगर कुछ करना हो, कुछ पूछना हो, कोई फीडबैक देना हो, तो we are always available. You can text us, and thank you so much. इंशाल्लाह ताला फिर जब कामयाब होंगे तो फिर साथ होंगे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।